Hey guys, welcome back to my channel. I'm Roshni. So आज की वीडियो के लिए I have created this makeup look with coppery brown eyeshadow, dark lipstick, and yeah. So without any further, let's get into this video. I will be starting up with this, the Nykaa Skin Genius Conceal and Correct palette in the shade Light 1. I will be taking this concealer and will be applying on both of my eyelids very nicely. I will be taking the Wet n Wild eyeshadow palette that is not in a good condition, and this is in the shade what? Nude Awakening. Okay, I'll be taking this shade right here and will be dabbing it on my concealer so that ये set हो जाता है दोनों eyes में. I have decided that I'll be doing a bit of red and brownish eyeshadow and like it will be easy कि आप उसको on daily basis use कर सकते हो for parties and stuff. So मैं start करूँगी ये dark brown eyeshadow लेके और उसको अपनी crease पे लगाऊंगी, just in the crease. इस eyeshadow palette का intensity बहुत ज़्यादा है, इसीलिए be careful while doing it. तो मैंने ले लिया है. You can see कितना ज़्यादा product it picks up, dust of the rest, and then I'll be applying it on my crease, only on my crease. उसके बाद विद द सेम ब्रश जो मैंने ब्राउन आई शेडो लगाने के लिए यूज़ किया, मैं ये रेड वाला यूज़ करूँगी. दिस इज़ अ डार्क मरून रेड. सो कुछ सारे ही स्मोकी टाइप्स होने वाला है. एक्चुअली आई हैव नो आइडिया. मैं बस मिक्स करते जा रही हूँ कलर एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट इट. ये रेड आई शेडो को लेकर आई वेरी केयरफुली कॉन्सेंट्रेट ऑन माई आउटर कॉर्नर ओवर हियर. आई प्लेस द प्रोडक्ट वहाँ पे, जस्ट डैब इन द प्रोडक्ट. बस डैब करना है. सी आई हैवंट स्टार्टेड ब्लेंडिंग इट येट. Just keep dabbing. And then एक clean eyeshadow brush लेके, yeah it's not clean, I'll mix the brown and the red. Then एक flat brush लेके I'll be using the Blue Heaven makeup fixer spray and इसको मैं गीला करूँगी. और फिर eyeshadow palette से dark copper brown eyeshadow लेके I'll take it and अपने inner corners पे like this portion I'll dab it in. It's your wish कि आपको कितना intense चाहिए. So the next step, same brush उसको opposite side घुमा के I'll be taking this shade right next to the red one, just because ये light है थोड़ा सा फ्रॉम द फर्स्ट शेड जो मैंने यूज़ किया, मैं उसको अपनी मिडिल आई में लगाऊंगी लाइक ऑन द सेंटर सो दैट इट विल गिव अ इल्यूजन ऑफ बिग आईज. सो या पैड इट इन with the eyeshadow. See, it was very simple. I'll be doing my eyebrows and I am using the eyebrow pencil. It's by Miniso in the shade 03 dark grey, and it has a spoolie and a product on the other side. So I'll be quickly doing my eyebrows. I'm done with my eyebrows. अब मैं क्या करूँगी, I'll carve out my eyebrows to give it a clean look. तो मैं दूसरा ब्रश लेके जो कंसीलर मैंने यूज़ किया था उसको बहुत थोड़ा सा लेके I will carve my eyebrows. It's like eyebrows के चारों ओर कंसीलर लगा लेना. Be careful while doing it on the down portion. इससे क्या होगा कि जो मिस्टेक हमने आई शेडो से भी किया होगा वो छिप जाएगा. ये करने के बाद मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी एंड आई विल बी ब्लेंडिंग इट आउट. सी यू सी द डिफरेंस. सो विल डू इट ऑन द अदर आई. अब इसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग अप विथ माई फेस. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं अपने फेस के लिए यूज़ करूँगी इट इज़ द ब्लू हेवन प्राइमर. आई हैव लॉन्ग बिन यूजिंग, बहुत टाइम हो गया इस प्राइमर को यूज़ करते हुए एंड इट्स परफेक्ट फॉर ऑयली स्किन. लाइक मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला. तो आई यूजली अप्लाई इट ऑन माई whole skin, like on my whole face, not only on the T-zone area. And it's been long that I have done a बात करने वाला video. It's always been voice over and stuff. So and काफ़ी जल्दी we are going to be at 500 subscribers and I'm really excited for that. So yeah, after applying this I will be color correcting my
बैड डार्क सर्कल्स, तो मैंने जो कंसीलर पैलेट यूज़ किया था उसमें से आई विल टेक द लाइट पिंक शेड एंड उसको मैं अपने अंडर आइज पे बस ऐसे ही डैप करूँगी ताकि यू नो द डार्क सर्कल्स गेट थोड़ा सा कम ऑन माई डार्क मार्क्स, माई blemishes. And then where's my beauty blender? I'll blend it out with my beauty blender. So moving on to the foundation, I will be using this sorry Superstay Full Coverage 24 Foundation by Maybelline, and this is in the shade 128 Warm Nude. Many of you guys, बहुत सारे मेरे दोस्त, they ask me कि why do you look dark in your pictures and in your videos you're really fair. Is just because I like to look warm toned, and my body color is different to my skin color. Like मेरा body color काफ़ी yellowish है like that, और मेरा skin it's like more on to pinkish side. So just to match my body color I do that. So I'll dab it all around with my fingers. Oh, I forgot on my neck. And then with the beauty blender I'll be dabbing it around. Okay, on to the next part. I'll be taking the same concealer जो मैंने अपनी eyelid पे apply किया था directly on my beauty blender, and उसको मैं अपने under eyes पे use करूँगी. And you know, to get that sharp look, क्या करना? After applying, just get a mark like this. See, that will clean your edges and it will give a perfect angle. So yeah, that is the trick I usually do, and I don't use sellotape. Like you can use, but I guess this minimizes the work. Next step, I will be using this. It is the Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder, and I tell you, this is amazing. And then this is in the shade 25 Medium Moin. So again, my beauty blender, be taking the powder and placing it right under my eyes and जहाँ भी you need to bake. Why baking? So that आपका concealer crease ना करे. And you can see even this powder is darker to my skin tone because I told you I love looking yellow and pale and whatnot. So, yeah. I'll be using this, the Sugar Contour de Force Face Palette 02 Vivid Victory. You have seen this in a lot of my videos because I find it like this is perfect, a perfect compact. This may you have a bronzer, a blush and a highlighter. तो और खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता, and I'm like जो है let's use that. Why to buy more and more? But being a beauty blogger, you need to, right? So anyway, I'll be taking a big fluffy brush and I'll be taking the bronzer, and let's cancel out this double chin stops. So yeah, placing and mixing it and getting that chin kissed glow to my face. नेक्स्ट मैं सेम ब्लश यूज़ करूँगी. ब्लश यूज़ करने से पहले सेम ब्रश से आई विल डस्ट ऑफ ऑल द पाउडर दैट वाज इन माय फेस व्हाइल बेकिंग. जस्ट swirl it all around. अब बहुत lightly take the blush and apply. You need to fake smile while applying it. So now coming back to the eyes, मैंने अपनी एक फ्लैट ब्रश में द डार्क ब्राउन जो मैंने क्रीज पे यूज़ किया था एंड द रेड कलर जो मैंने आउटर कॉर्नर वी पे यूज़ किया था उसको मैंने थोड़ा सा इसमें ले लिया है, एंड आई विल बी अप्लाइंग इट ऑन माई लोअर लैश लाइन सो दैट इट लुक्स कंप्लीट. Now next step is applying a winged eyeliner, and I will be using this Big Eyes eyeliner, double end and eyeliner. This is again by Miniso, the best product of Miniso that I've been using. इसमें एक साइड काजल है एंड दूसरे साइड पे लाइनर, तो इट्स रियली ट्रैवल फ्रेंडली. तो मैं एक विंग लाइनर बनाती हूँ, और यू कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू मस्कारा. लाइक इट्स टोटली योर चॉइस. इट्स ओके इफ यू डोंट, बट आई विल बी डूइंग इट.
क्योंकि and I'll be doing a big one. So then I'll be using the kajal part and will be tightlining my upper eyelashes and applying on my waterline. Next, I'll be using the Total Temptation by Maybelline, and this is the best mascara. So I'll be layering it up बहुत ज़्यादा. We girl do make weird faces while applying mascara, right? And then on the lower lash line, I'm not talking, but like इधर उधर लग जाता है, and it's a big mess. Before applying my favorite thing, that is highlighter, I'll be taking the fixing spray and will be spraying it once so that all the powder जो already हमारे face पे है ताकि वो melt हो जाए. Not too much. और beauty blender लेके just dab in ताकि जो excess powder है that it absorbs and you get a flawless skin. Last, for my highlighter, I will be using the Nykaa the Nykaa Glow Getter Highlighter Duo. It is in the shade Moonshine 03. So I'll be using this one. This is, I guess, the blush gold one. And with this fluffy brush, I'll be taking it and dusting the rest. And this is the amazing highlighter. So you see the shine. This is so pretty. And yesterday I was watching one of Rihanna's video. Uska makeup artist explained कि the way she applies highlighter is taking the highlighter यहाँ से ऐसे शुरू करके ऐसे लगाना. So when you turn around, it gives a perfect, you know, that shine. So like I usually do that, but you know, for this video, let's try it out. So at last I will be completing the look by using the Nykaa Lips Don't Lie lip liner in the shade Dirty Secret. Wasn't supposed to do that. Never. Yeah. You know, before starting your makeup, एक काम ज़रूर करिएगा. Do apply lip balm. It's easy to do. Like apply lipstick later on, and I forgot to do that. So now, for this look, you can either go with any dark shade or any lip gloss or any lipstick. So I'll be going with this one, the Maybelline Superstay Matte Ink, and this is in the shade 230 Transformer Lip Color. So I'll be using this, and I so love this color. And again, at last spray off this stuff. So guys, आज के लिए बस उतना ही. I hope you guys enjoyed this video. If you did, hit the like button, subscribe to my channel because it is free. And हम लोग बहुत जल्दी 500 subscribers क्रॉस करने वाले हैं. Not cross, पहुंचने वाले हैं. So I'm really excited for that. And thank you everyone for your love and support. And keep showering love. And you can follow me on my Instagram. All the links is in the description bar below. So do not forget to follow me there. And rest. Stay tuned. Bye guys.